हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उसामा रमज़ान और आज मैं आपसे एक केस बेस्ड नॉलेज शेयरिंग करूँगा। मैं आपको एक केस कोट करता हूँ, देन वी विल डिस्कस सम नॉलेज रिलेटेड थिंग्स फ्रॉम दैट केस एंड वन स्टेटमेंट दैट आई वुड लाइक टू शेयर इज़ you all have heard of a quotation, autoimmune diseases love to occur together. So how I would like to share the application of this knowledge is uh, a female presented in our endoscopy site. She was advised to go through colonoscopy for the anemia. एक फीमेल ऑलमोस्ट 43 ईयर ओल्ड की थी जो उसे क्लोनोस्कोपी एडवाइस की गई थी क्योंकि उसके जो बाकी टेस्ट थे वो किसी रीज़न के ऊपर लेकर नहीं जा रहे थे जो कि अनीमिया की वजह बताती। तो एंड में बाज़ औक़ात फिर अनीमिया के वर्कअप में क्लोनोस्कोपी को भी अक्सर यूज़ किया जाता है। आई वाज़ क्यूरियस, तो मैंने उनसे पूछा कि आप जो हैं वो कब से बीमार हैं। Sometimes when there are multiple disorders or issues from which the patient is suffering, I love to ask the way when you are when you were totally normal। यानी कि उर्दू में अगर आप किसी से ये पूछना चाहें कि आप मुझे मुकम्मल अपनी तफसील बताएं बीमारियों की जो भी आपको हैं, तो उसका एक बहुत ही आसान तरीका है। आप उस मरीज़ से या उनके अटेंडेंट से ये पूछते हैं कि ये आज से कितने साल, कितने महीने या कितने दिन पहले मुकम्मल ठीक थे जब इन्हें ज़िंदगी में कोई बीमारी नहीं थी। तो फिर उस फीमेल ने मुझे बताना शुरू किया कि मैं तकरीबन 2 से ढाई साल पहले बिल्कुल ठीक थी। उस वक़्त फिर क्या हुआ कि मुझे उस वक़्त जोड़ों में दर्दें वग़ैरह होने लगीं। फिर डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट्स बताए और फिर उन टेस्टों के बाद जब मैं वापस डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बताया कि मुझे रूमाटॉइड आर्थराइटिस है। तो रूमाटॉइड आर्थराइटिस जो है वो एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो बताने लगी कि मुझे डॉक्टर ने रूमाटॉइड आर्थराइटिस के लिए मुख्तलिफ मेडिसिन्स लेने का कहा। And she was using delta cortal, HCQ and other medication for pain management as well, on and off as required or per needed, जिसमें कुछ पेन किलर्स भी थे, कुछ टोनोफ्लेक्स थी टैबलेट्स, और उसके अलावा बाकी जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स थी। somehow I got one clue कि इसके अनीमिया की एक रीज़न एनसेड्स भी हो सकते हैं। वो कैसे, मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो खैर इस तरह मैंने उनसे कुछ थोड़े से और हिस्ट्री पूछी। तो द हिस्ट्री वाज अनफोल्डिंग इन ए पैटर्न फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। तो वो इस तरह मरीज़ या उनके लवाहिकीन बताते रहते हैं कि इन्हें ये हुआ, फिर ये हुआ और इसके बाद ये हुआ। तो खैर उन्होंने ये बताया कि 2 साल पहले वो ठीक थी, उनको मसला होने लगा दर्दों का, उसकी वजह से उन्हें पता चला रूमाटॉइड आर्थराइटिस है। डॉक्टर ने उन्हें मेडिसिन एडवाइस कर दी और वो अब कुछ मेडिसिन ले रही थी, लेकिन साथ ही उन्होंने फिर कुछ एक बात बताई कि हाँ जी वो जी ये थायरॉक्सिन की टैबलेट भी लेती हैं। तो देन आई केम टू नो दैट पेशेंट वाज आल्सो हैविंग हाइपोथायराइडिज्म। So now I want to make a point that these both diseases, rheumatoid arthritis and this hypothyroidism, are both connected, and you can explain that autoimmune diseases love to occur together. So we always can learn a lot from a simple patient. There are always so many educational objectives. Just one patient can teach us a lot. So in short, we learned that the patient was having rheumatoid arthritis and also hypothyroidism, and both of these diseases by origin are autoimmune. And then third thing that was also can be the possibility of anemia in this patient can be celiac disease. But right now or on that time I was not having any evidence of that celiac disease. So let's summarize the case, and the reason why I made this video is to share few things that
autoimmune diseases love to occur together. हमारे बहुत से सीनियर डॉक्टर्स मेरे वार्ड के, या वो सब लोग जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है, या आप लोग जिन डॉक्टर्स के साथ काम करते हैं, आप भी सुनते होंगे। और इसी तरह बहुत से पेशेंट्स में ये जो नॉलेज है, इनकी एप्लीकेशन का मौका भी हमें अक्सर मिलता है। लेकिन द ब्यूटी ऑफ appreciating your bookish knowledge and applying your bookish knowledge in a real practical world sometimes gives you a lot of confidence and also encouragement as well. So not just books are enough to be a good doctor. Books from where you read knowledge and then apply this knowledge to a real world patient is always a lethal combination. By this, you day by day become a good and better doctor. And then in the last, uh, I also was suspecting that our colonoscopy report was also normal, upper G endoscopy was also normal, but still the cause of anemia was not clear. So one thing that can be the reason of anemia is some lesions deep in the intestine above T4 level, where you cannot go with upper GI endoscope, and also you cannot have a look with colonoscopy. So NSAIDs in a short time, I also want to share knowledge that NSAIDs when taken for a long time can produce some lesions deep inside the intestine where you have anemia, or sometimes rectal bleeding or blood mixed with stools, but you don't find any cause. So the culprit can be non-steroidal anti-inflammatory drugs. Okay, I think this 8 minute almost session is a long session, keeping in mind the real world patients of doctors and other social media users, as we all know that the trend is of shorts.